Good afternoon, everybody. It's a Sunday, and because we had missed one day in between, that day when my computer had problems, that day when there was a power failure as well as a net failure, I could not conduct the session. Therefore, this is the last session. It's a session of 6 sessions. On the first day, we had a getting organized. This is the second session now, actually, the one that we had missed out. Then we had reading skills, we had note-taking skills. Madam had conducted on how to take care of yourself, how to not get stressed. Then yesterday we had seen critical thinking. How is critical thinking? And we had also seen some videos. And today is the 6th session, the last session on study skills. When we study, there is an end point to study. I was looking at the list, the participants, the name of the list participants. Somebody had made a mention as SYBSC, FYBSC, TYBSC. So SYBSC will end someday, and you will be in TYBSC. FYBCom will end someday, and you will be in SYBCom. Someday that will happen. Now, when that ends, you have to give an exam. Today we are going to look into how to prepare for exam. We are also going to see some very specific technique. I want you to participate today a lot. And then we'll also be looking at a small component called preparation for examinations. Okay, if you're not able to hear me, let me see if there's any problem from my side. I hope you are able to hear better now. I don't know. Sagayan ऐकू येतंय का? Connection? Are you all able to hear me? Yes, sir. We can hear you. Fine. Thank you so much. There was a message saying that we are not able to hear you, so I asked you. So, well, just 1 minute. Yeah. Now I hope everybody is able to hear me. Now, so we are going to look into how to prepare for exam and how to give exam. These are the 2 skills that we are going to see. One is a smaller skill, but a bigger thing. And the second one happens to be a bigger thing. We are going to look into both. Today we are going to look into something called as revision skills. And we are also going to look into examination skills. This is where we complete our sessions today. But keep in mind, only after giving after going on our कौन पे LMS. देख रहे थे? देखो कार्टून. Please mute yourself. डांटेंगे? अच्छा, घर में तो बराबर है. घनश्याम त्यांना म्यूट करता येईल का बघा बरं जरा. अमित. Now, so you are able to see that we are going to look into revision skills and examination skills. And we are actually going to do some work also. See, we have seen getting organized. We have seen thinking skills yesterday.
Listening skills was taught by a madam. Note taking was taken by a madam. Reading skills was taken by a madam. Note taking and writing skills actually go a little hand in hand, and therefore that we had taken. Along with it, she had also taken on stress management. And today we are going to go with revision and examination skills. So let us look into what these revision skills are. All of us know what revision is, no doubt about it. Skills that is data that are needed to prepare, to learn the content so that you become better, excel, or to get ready with the objective of preparing for the examinations. हम रिवाइज कब करते हैं? जब ऐसे लगता है कि हम शायद भूल रहे हैं, या जब ऐसे लगता है कि आज जो पढ़ा है उसको जरा एक बार फिर से पढ़ लेते, दैट इज रिवीजन. या फिर जब अंत समय आया तो यानी एग्जाम आई तो that time also you go for revisions. And therefore preparing for revision is an art. And we will try to look into how to revise. Now if you look at the revision, the first part is to plan. When you are planning for revision, क्या क्या आने वाला है देखो उसमें. Which subjects do I want to learn? This is one thing. We will do one small thing. We will do one small thing. Come to chat box now, all of you. We are going to look into revision skills. Fine. I am going to ask you something. How many subjects do you have? You will give your name and the total subjects that you have. The total subjects, names. Yeah. Name. Somebody's okay. Give the names of the subjects. Okay. Your name and subject's name. Fine. Krashik makes a mention, 2 subjects, chemistry and zoology. Fantastic. Okay, you have 2 subjects. Someone is waiting for some more to say. Zoo and chemistry, Rizviology also makes a mention of it. Okay, fine. Bushra ji also makes a mention. She makes a mention. Okay. What are the subjects? Zoology and chemistry. Okay, we have a lot of zoologists. I also have zoology. Okay, fine. You have 2 subjects. How many papers do you have in zoology and chemistry? Can you tell me that? Fine. Zoology and chemistry. Farooqi, okay. Botany and zoology. Software, embedded system, core, Java, computer graphics, statistics. 3 papers each. Fantastic. That is, you have 6 papers in all. Fantastic. That's what I wanted to ask you. Right. You have 6 papers. Now, think so that, just think out. If there are 6 papers, on an average, how many chapters do you have? On an average. Can you just guess out? अंदाजा कर सकते हो कि on an average, कहीं पे तो भी 5 हो सकते हैं, कहीं पे तो भी 6 हो सकते हैं. How many chapters in all do you have for learning? If you have 6 papers, total number of chapters that you have. Can you tell me? Okay, 3 units. Fantastic. There are 3 units. But then 3 units, do they have chapters? In case there are 3 units, do they have 5, 6 chapters in all? Or there are 3 chapters only? Okay, 3 chapters, 3 units. That is 3 units per paper. Is it so? That would mean that 6 papers into 3 units. That is 18. Is that right? 18 units, Fantastic. Afrin ji makes a mention. Think that is 18 units in all. Now think that you have, देखो अब ये plan कर रहे. Think that you have 2 months in hands. You have 1 month in hand for examination. Now this is May. So you must be having your examination in June. So 1 month in hand. So if you have 1 month in hand, 18 units and 1 month in hand, that would mean how many days per
unit do you have? If you have 18 units in hand, and let us say if you have 30 days, or let's forget 30, 45 days. If you have 45 days and 18 units, effectively per unit, how much time do you have? What will that be? 45 divided by 18. Let us make it this way by 18. Let us keep it 15 only for the while. So that it is easy. So how many days is it? If it is 45 divided by 15, how many days will it be per unit? Per unit कितने दिन मिलेंगे हमको? 45 divided by 15. What will be the total number of? Yes, please. 45 divided by 15. टोटल कितने दिन मिलेंगे हमको? Absolutely 3 days. Rizvi makes a, Zamir makes a mention saying we have 3 days per unit. Per unit. Now, think that there are some easy units and there are some difficult units. For you, think how many of them can be difficult and how many of them can be easy. Approximately कितने percent या कितना number out of the 15, how many of them are easy for you? It could change from person to person. How many are easy? 6 are easy and 9 are difficult. Fantastic. 6 are easy and 9 are difficult. That's what Sharik Siddiqui makes. 8 are easy. That's what Ikra Sheikh makes a mention. And if 8 are easy, that would mean that 5 to 6 are difficult. Okay. Or 7 are difficult. So somewhere it is 45 and 55%. 9 are easy and 2 are difficult. This is something really very great. Now that would mean that you have to give more time on what is difficult and relatively lesser time on what is easy. Am I right? You have to give more time on what is difficult and lesser time on what is easy. Now, if you have 3 days per, that is 45 days in all, how many days will you give for difficult and how many days will you give for easy? Percent bolo. No, it's okay. How percent? So much percent is for difficult, so much percent is for easy. Then we can find out the days according to your situation. How many days for difficult component? Now, how much percent of days for difficult component and how much percent days for easy component? 60% for difficult, 40% for easy, or 30 and 70. That's what you are able to see. Absolutely right. So now we need to think, though the exam dates may not have come or they may have come, we need to see and think in this way. How much time is available, what I need to work more on, and what I need to work less on. So our first job is to identify what is difficult and what is easy. And it is not going to be that this unit is easy and this unit is difficult. It may so happen that in this unit, this is easy and this is difficult. In this unit, this is easy and this is difficult. It is also possible. So it would mean that we need to look at our syllabus more carefully. ये पहली बात आती है. We need to see to it that we need to be careful to first look at all the topics. उसमें भी कितने पढ़ाए गए और कितने पढ़ाए गए नहीं है, ये भी एक और बात है. तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी आपसे तैयारी कुछ करवा ले या ना ले, कॉलेज आपसे करवा ले या ना ले, आपको काम शुरू करना है. क्योंकि 3 दिन है तो इसका मतलब है कि ये तो काफी डिफिकल्ट हो गया. दिन रात तो नहीं बैठ सकते, बैठना भी नहीं चाहिए. इसका मतलब है the next part comes into picture. How much time can you give in a day?
Assume, think, I'm not saying, think you spend 2 hours a day for study. Think. I know many of you don't do that also. Think you are studying for let us say 2 hours a day. Now, how much should you study? Because you have only 3 days for one chapter, one unit. Now, how much do you need to study? If you are studying, if you have 3 days for one unit, and if you are studying 2 hours every day, मान लो आप पढ़ रहे हो, तो अभी कितना पढ़ना चाहिए? It can be a wild guess. It can be a guess for each one, a different one. But I want to know, are you thinking on these lines? How much time do you need to give to study? I am waiting. I want you to answer. I'm very happy you're answering. That's really very great. 4 hours. Somebody is making a mention saying 4 hours I need to put in. Anyone else who wants to say anything else? If you're studying for 2 hours, you need to study for 2 more hours. If you're not studying, you need to study for 4 hours. Anyone else has to say anything? I'm asking these questions because later on, 12 hours. Okay. Let us see whether we can do that. We're going to see some more things. Somebody is saying we need to sit and study for 12 hours. Okay. Anyone else has to say anything? I'm waiting. I want you to participate. I love to see when you're answering things. It's really very, very interesting to see all of you participating, you answering the questions. That makes me very happy. Yes. Somebody has said 4 hours, somebody has said 12 hours. Will somebody like to make a mention? Anything add to it? कुछ नहीं बोलना है किसी को? राह देख रहे हैं भाई. You can directly talk also. Today I have tried to 5 hours. Okay. You can do one more thing. 5 hours is someone Rizvi has made a Mr. Rizvi Zamir has made a mention. You can talk directly with me today. I have told my technical team that take everybody on the Zoom so that we can actually enjoy directly. Yes. Will somebody like to make a mention? How much time? Somebody has already told it is 4 hours. Somebody has said 5 hours. Somebody has said 12 hours. Will someone else like to say anything else? नहीं बोलना है किसी को कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं. Let's go ahead with the presentation. We will like to add something more to it now. अब अगर ऐसा है, then in that case, just 1 minute. This is one part that we were talking about. So, number of subjects that you have, number of days that are available, ये हमने गिन लिया है. What is easy and what is not so easy, इसको भी निकाल लिया है. We will have to do a to-do list. On which day, what? Then we need to check whether we have our notes ready. वो बहुत बड़ी बात होती है. We must check whether our notes are ready. That's the most important part. अपने हाथ में जो चीजें है वो ready है कि नहीं है. And we also need to know how am I going to revise. We are going to look into these things again, not an issue. And there is one more thing that we need to track the time and the work that is being done. ये complete हो गया क्या? Tick mark. ये complete हो गया क्या? First division हो गया क्या? Second division हो गया क्या? Tick mark. We need to work. I wish to tell you a story. Up to 12th standard, I was not a sincere student.
Life was very difficult with me. बड़ी मुश्किल होती थी, पढ़ने बैठे तो जान निकलती थी. I got very less marks. My father was a teacher. My mother was also a teacher. And both of them felt very bad because nobody had got so less marks in पूरे खानदान में किसी को इतने कम मार्क नहीं मिले थे. बड़े मुश्किल से 35% मार्क मिले. पासिंग को 35 लगते, मुझे 35 ही मिले थे. वो 12th स्टैंडर्ड के मार्क लिस्ट में ऐसे भी दिखाया था कि इसको 3+ मार्क मिले, यानी फेल होने वाला था, उसको धक्का देके आगे पुश कर दिया है. मेरे पापा ने उसको देखा, उनको बहुत गुस्सा आया, पर गुस्सा आने के बाद में इतना बुरा लगा कि वो रोना शुरू, उनकी आंखों में से आंसू आए. रोना है, नॉट द वे वी क्राई, इन द सेंस दैट ही स्टार्टेड वीपिंग आउट. माय मदर सॉ इट एंड माय मदर गॉट वेरी एंग्री. एक्चुअली बोथ ऑफ देम न्यू आई एम नॉट गुड इन स्टडीज, ये सबसे बड़ी बात है. बट दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इसको इतने कम मार्क मिलेंगे. और फिर बड़ी मुसीबत हो गई. Both of them stopped talking. They did not talk. They used to serve me food. I used to do the work also, whatever was given. But they did not talk to me. They were very disturbed. They were very hurt. And then something started. My papa said that, you go and start learning typing. When I could learn a little typing, तब typewriters हुआ करते थे, तब ये लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स ऐसे कुछ नहीं था. तो टाइपिंग का क्लास हुआ करता था, उसकी फी हुआ करती थी 6 रुपए, हर महीने जाके 6 रुपए भरने, 1 घंटा टाइपिंग करना है. QWERT, ASDF, GH, ऐसे कुछ वो टाइप करते बैठते थे. उसके बाद में सेंटेंसेस टाइप करना शुरू किया. उसके बाद में स्पीड टाइपिंग शुरू हो गया. I was doing well with it, but he was not a happy man. He had started thinking that this boy of mine is not going to be successful in his life. He needs skills such as typing so that he is able to live at least happily. Every parent's dream that their children learn very well. And if you want to learn very well, you need to plan. Otherwise, they feel very hurt and we are not able to do anything. It hurt me so much that my papa used to cry. I did not understand what is happening and how I should react to it. So I started studying. And then I started planning also at one point of time. And then I understood if I am planning, I must work it out. Nobody was teaching me anything. I started going to the college. College was going on the way your college goes. Every day I used to come and write down everything that was given. It's a very foolish way. हर रोज आओ और वापस पूरा लिख के निकालो. Just write down. That gave me practice. It was not a very good way of learning, but it was a way of revising. And so revision became very good. And one point of time, I became an excellent academician. So you're able to see when you are setting a goal, when you are planning, you have to be real. Somebody made a mention, I should study for 12 hours. Can you sit and study for 12 hours? If you can, it's great. If you cannot, then you will get tired. You will get fatigued. And then you will not feel like studying only. So therefore, when you are revising, we need to plan. How to revise, we need to plan.
हाउ मच टाइम आई कैन सिट, उतना ही देर बैठना, उससे ज्यादा बैठते तो ग्रेट ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर कितने देर बैठ सकती है हमने पहले सोचना है। आपके सामने 5 किलो खाना लाके रख दिया, आपको बहुत पसंद है, फिर भी आप 5 किलो नहीं खाने वाले, आप थोड़ा सा ही खाने वाले हो। 5 किलो तो 15 लोगों के लिए सफिशियंट है। आप बहुत कितना भी पसंद आए तो भी इतना नहीं खा सकते, क्यों? इन द सेम वे, आप चाहे जितना को, आपके पास 24 आवर्स है, आप 24 आवर्स शायद पढ़ नहीं सकते, कितना पढ़ सकते हैं उतना ही प्लान करो। मान लो आप पढ़ सकते हो 3 घंटे, तो 3 घंटे का प्लान करो। अगर आप 4 घंटे कर देते हो तो दैट्स ग्रेट। अगर आप 4 घंटे कर सकते हो 3 के बजाय तो दैट्स ग्रेट। वन स्ट्रोक अगर नहीं 4 घंटे कर सकते हो तो कोई बात नहीं, 1 घंटा करो, उठो, चाय बनाओ, पी लो, कोई और अपने घर में मांगता है तो उसको भी दे दो, इधर उधर घूमो, कोई छोटा मोटा काम करो, ब्रेन में जो थकान आ गई उसको दूर करो, फिर आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, फिर पढ़ो, दोस्तों के साथ बात करो, पर तब आपने जो टारगेट सेट किया है 4 घंटे का, उसको पूरा करो। आपका प्लान है ना, आपने प्लान बनाया कि इतने इतने दिन इतने इतना काम करना है, तो एक साथ तो नहीं बैठ के होने वाले 4 घंटे। अगर नहीं हो सकते तो उठना है बीच में से, फील वेरी फ्री टू गेट अप, रोम हियर एंड देयर, प्रिपेयर लिटिल टी, ड्रिंक इट आउट, धूप के दिन है शरबत बनाओ, कुछ पी लो, इतना मत पियो कि सो जाओगे। अगर आंखें थक जाती है तो उसको बंद करो, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करो, एक जगह पे मत बैठो, स्क्रीन टाइम कम करो। पर आपने जो गोल सेट किया है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जितना मैं कर सकता हूं मैक्सिमम उतना आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, सो दिस इज वन थिंग। जैसे कितने घंटे बैठना ये मैंने तय किया है, तो मैं नहीं कहूंगा 12 घंटे बैठने, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं सकता 12 घंटे। 2 घंटे हो गया कि फिर उठूंगा, फिर आधा घंटा घूमूंगा फिरूंगा, फिर आके बैठूंगा, फिर 1 घंटा काम करूंगा। पर जो सिलेबस प्लान किया है वो घंटों के हिसाब से नहीं, तो सिलेबस के हिसाब से प्लान, उस सिलेबस को पूरा पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, उसके की कंसेप्ट जान लूंगा, उनकी कंसेप्ट को लिख के निकालूंगा, वो आपकी नोट बनने वाली है। सेट द गोल। एग्जाम को नहीं, आप रिवीजन को बैठते हो तब और क्या क्या करना चाहिए, ये एक और बात है। चेक योर मटेरियल, लगने वाली किताबें आपके पास है क्या? पहली बात, अगर किताबें नहीं है वो आपके पास होनी चाहिए, जो खास करके जो लगती है वो होनी चाहिए, तो उनको लेके आओ। लाइब्रेरी से मिलती होंगी या आपने परचेस की होगी, जैसी है, या दोस्त से लाई होगी और उसको वापस करने वाले हो, तो ये 3 दिन में, ये 2 दिन में हम कंप्लीट करने वाले हैं, ऐसा कुछ है प्लान। सारी किताबें पहली होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपकी नोट्स। Do you have your notes? If you don't have the notes, prepare them. If you have your ready notes, see to it कि they are with you. जो नहीं है उतनी बना लो। See to it that your notes are ready with you, क्योंकि वो that is the best way to learn. हमारी नोट्स से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और क्या लगता है हमको? क्वेश्चन बैंक्स लगती है। यूनिवर्सिटी ने अगर क्वेश्चन बैंक निकाली होगी, कॉलेज ने अगर क्वेश्चन बैंक निकाली होगी, तो सारे क्वेश्चन बैंक आपके पास रख लो, क्योंकि when we are preparing for the examination, what is the type of question that is going to come, that we should know ना। मैंने सारा प्रिपेयर किया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, तो समझ में नहीं आएगा कैसे तैयारी करूं। मैंने ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी की है, यानी पूरा पढ़ा ही नहीं है, और सब्जेक्टिव आ गया तो जान निकल जाएगी। सो नो द क्वेश्चंस, नो द क्वेश्चन बैंक, हैव द नोट्स। हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो, उनको देखो। ये सारी बातें आपके पास होनी जरूरी है। ऐसा कभी कभी होता है कि आपने आपकी नोट्स निकाली है पर टीचर ने भी नोट्स दी है, तो टीचर की नोट्स बहुत डर लग रहा है।
उस टीचर की नोट से आपकी खुद की नोट्स, दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. सो दो टाइप की नोट्स लगी. सबसे बड़ी बात यह है कि डू यू वांट टू लर्न, आर यू रेडी टू लर्न. सो यू आर एबल टू सी willingness to learn. This is the big part that you are able to see. Are you willing to learn? If you are willing to learn, these are the aspects that you need. आपके पास आपकी किताबें होनी चाहिए, आपके पास आपकी नोट्स होनी चाहिए, आपके टीचर ने दी हुई नोट्स होनी चाहिए, आपकी क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन पेपर होनी चाहिए, और दिल और दिमाग से आपने रेडी होना चाहिए कि भाई मुझे पढ़ना है. इसके अलावा क्या है, रिवीजन स्किल्स में आता है, टेक केयर ऑफ योर फूड. एग्जाम आने वाली है, कुछ भी मत खाओ जिसके कारण पेट बिगड़ता है, ऐसी चीजों को मत खाओ. पेट को लाइट रखो, नहीं तो रात को बड़ी जोरों से एकदम ताव मार के सब खा लिया है, फिर पढ़ाई नहीं होगी, नींद आ जाएगी. See to it that what you eat, that is being regulated. You can tell your mother कि mama, this becomes very heavy, please don't prepare it for me, or don't give me more to eat. Take care of your health. Though you are studying, though you are revising, take care of your health. जरा अरे बघ ना कोणाचं चालू आहे ते जरा म्यूट कर ना त्यांना प्लीज. Don't forget to talk to your friends. Don't forget to be with your family. Otherwise, you will go all alone. और फिर बोर होना शुरू हो जाएगा. अगर आप रात को 11 बजे तक जग सकते हो तो 11 बजे तक ही जगो. रात को 2 बजे तक जगूंगा ये मत कहो, क्योंकि फिर उतनी नींद तो हम निकालती है कहां से भी, नहीं तो दूसरे दिन प्राइम टाइम में हम सो जाएंगे. So see to it that you take sufficient rest also when you are studying. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने कहा था ये करो तो इसका मतलब यही करो. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर ये भी इंपॉर्टेंट है. अभी कैसे पढ़े, दिस इज द बिग पार्ट दैट इज कमिंग अप. हाउ डू वी स्टडी, दिस इज द बिग पार्ट दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू. सम कैन रीड एंड दे लाइक इट. सम राइट टू राइट इट एंड दे स्टडी. Some like to read and remember. You may also do it this way कि आपने आपकी नोट्स बनाई हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड कर लिए हैं. आप लोकल से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, कान को लगा दिया है, आपकी आवाज नहीं सुन रहे हो, वो पूरा चैप्टर आप ही पढ़ रहे हो. All important things are being recorded on the mobile. You are listening to it. Chapter 1 important क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हमने हमारे नोट से उनको बराबर पढ़ के बराबर बनाया है. Everything is put on the mobile. It is as a sound. उसको सुनते बैठते हैं. I have some students who do this every time. उतना ही नहीं है कि जब लेक्चर होता है तो वो कहते हैं कि सर वो जरा मुझे मोबाइल पास में रखना है. मैं कहता हूँ क्यों भाई, क्या बात है, रिकॉर्ड करना है. लेक्चर ही रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, नोट्स तो ले रहे हैं पर रिकॉर्ड भी करके रखते हैं. क्यों? When I am free, I will put it on my ears and I will keep on listening it. काम चालू है, पढ़ाई चालू है. Somebody में से नहीं, ये स्टाइल नहीं मुझे पसंद है, तो रिमेम्बर व्हाट यू रीड. जो पढ़ा है उसको बंद किया, रिमेम्बर किए. 5 पॉइंट्स थे इसमें, 5 में से कौन से, 1 2 3 4 5. Now I am able to remember only 4. What is the 5th one? Open the book, read it out, got all the 5 points. You may also have a habit. I had that habit during my master's degree. I used to take out notes regularly. And I had 2 friends. In Pune University, there's a library called Jaikar Library. उस लाइब्रेरी में सेंट्रल टेबल्स थे और साइड के टेबल्स थे. साइड के टेबल्स खिड़की के पास थे. खिड़की में से कुछ दिखता नहीं था पर खिड़की के पास थे. मैं मेरी नोट्स बना के लेता था. आई हैड 2 more friends. वो दोनों कहते थे कि तुम when you explain ना, I understand better. It used to take time. I used to prepare notes. I used to go and explain them.
देखो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन आई बिकेम अ गुड टीचर, एंड बिकॉज आई यूज्ड टू एक्सप्लेन देम दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट, तो वो ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था, तुम जो बताते उतना समझ में आ जाता है बोलते। सो लिसनिंग के कारण भी हो सकता है, यू आर एबल टू सी ओवर हियर। लर्निंग विथ फ्रेंड्स इज वन मोर वे आउट, शेयरिंग विथ फ्रेंड्स इज वन मोर वे आउट। मेनी अ टाइम्स यू मे फाइंड दैट द टीचर इज एक्सप्लेनिंग और समझता ही नहीं है, और फ्रेंड कहता है कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, ऐसा किया तो हो गया, ऐसे ऐसे करो, एंड यू बिलीव इट एंड इट वर्क्स फैंटास्टिकली. So you're able to see there are a variety of ways by which you can learn. Find the way you can learn, use the ways that you can learn, and keep on learning. आप कहते हो ना कि भाई हमको 12 घंटे पढ़ना है, अगर मोबाइल के ऊपर सारे के सारे साउंड क्लिप्स लेके रख दिए होंगे, कान को लगा दिया, तो आप वाकई 12 घंटे पढ़ सकते हो, आपका ही आवाज है, आपको तो बोर नहीं होगा. So you have to see to it that you are constantly learning. This is the big thing. There is one more method which we are going to practice now, that is called as Buzan's mind map. But before that, I have seen there is a hand raise, I think so. Somebody had raised the hand. In case you have any questions, please ask me. I thought I saw a hand raise. Is there a hand raise by any chance? Anyone has a question? Anyone wants to add what you do? Can you tell me how you revise? I'd like to hear from you. तुम कैसा रिवाइज करते हो, आप बता सकते हो? आपने आपका नाम बताना है और रिवाइज कैसे करते हो ये बताना है. आज जानबूझ के मैंने कहा कि भाई किसी को यूट्यूब पे मत रखो, जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे हमें चाहिए, दैट विल बी बेटर. कैन यू टेल मी व्हाट ट्रिक यू यूज? आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू. छोटी सी भी ट्रिक होगी तो भी बताओ, कुछ अलग भी होगा तो भी बताओ. इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू समवन एल्स. You can unmute yourself and talk. Yes, please unmute yourself and talk. Yes, Sharik Siddiqui, please tell what do you do? You said Q&A, question and answers. You please let everybody know it. We'd like to hear from you, Sharik. सर मैं अपने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक बेसिक आप क्वेश्चन. खुद को पूछते हो सवाल? हाँ सर. That's really very nice. टॉपिक देखूंगा, मतलब उसके अंदर क्या है, फिर रिकॉल करूंगा, और जो नहीं है फिर वो बाद में जाके देखूंगा क्या मैं मिस कर चुका हूँ. ओके, यानी आप शरीक आप ऐसे करते हो कि आप टॉप पहले पढ़ लेते हो, उसके बाद उसके सवाल बनाते हो, उसके बाद में आप उसके जवाब देते हो, राइट? सर. Yes, that's really very nice. This is a different and good way. I'll tell you one more thing. Yes, Fatima, I want to hear from you, Sheikh Fatima. You want to say something? Yes, please. What you are writing down, please speak it out. Yes, Fatima, you have given it, mentioned it in the chat box. I want you to talk it out so that everybody understands. Please speak. Don't be scared. Yeah, yes, good. so when I study and when I revise, I just say loudly the important terms and lines which I previously highlighted at the time of revision. Okay, so it would mean that when you're revising at that time, you have done some highlighting. See how different methods are coming out. Sharik makes a mention saying that he prepares small questions on the entire content. इसका मतलब एक analysis हो जाता है पहले. Then he is answering those questions, and then he is able to remember these points. I'm going to go parallel to that method, Sharik, after some time. And she has made a mention saying that she highlights out, just 1 minute. She has made a mention saying that she highlights out Fatima has made a mention saying that she highlights out the important terms and she reads them out a little loudly. This is one more way by which you can read out. That's really fantastic. Anyone else? Maybe a small thing also. Keep in mind, you need not be a great champion in learning, but you may be having your own way. Yes, Javeria Ismail Khan, can you tell me? Please speak it out loudly. I want you to talk. Yes, please.
Yes, you are making Javeria mein, you are making a mention of it. No, please speak it out. Yes, please, Javeria, could you please speak it out? Yes, sir. Yes, can you please speak out? Yes, sir. Yeah. सर मैं जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस वगैरह रहती है उसको अंडरलाइन करती हूँ, देन रिवीजन के टाइम पे सिर्फ वही लाइन पढ़ती हूँ। इन्हें आप किताबों में ही अंडरलाइन करके रखते हो या नोट्स Yes, बनाते किताबों हो? में ही अंडरलाइन करते हैं और फिर उसको नोट डाउन करके रखते हैं, फिर एग्जाम उसको के नोट टाइम डाउन पे करते उसको हो। लर्न कर लेते हैं। तो उसको ऐसे Fantastic. टेक्स्ट बुक के रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, खाली नोट्स पढ़ लेते तो हो जाता। Fantastic. That's really very great. Anyone else wants to say anything else? That's really very nice. It's great to hear from you directly. Okay. Now what we will do is we will go for one more different method of revising or even learning that we are able to see. I don't know if you have heard with this method. If you have heard it, it's great. If you haven't heard it, you will be learning it by this. This method is called as remembering a Buzan's mind maps. Does anybody know about Buzan's mind maps? Has anybody heard about Buzan's mind maps? Or have you tried anything like Buzan's mind maps by chance? If you have tried, yes, please. No. Okay. Sharik says no, it's a no. Okay, fine. We'll try to see what Buzan's mind maps are. Now see what you are able to. Just 1 minute. Now, let's try to understand how we learn. How we are taught is a different issue altogether, but how do we learn that? Now, what is it that we like? See, if you just think, I am not talking how you are taught. We all like pictures, photos, images, videos, isn't it? Right? We like colors. We like to be comfortable while learning. दिख रहा है ना आपको? व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. या फाइन. नहीं, हमको ना, हमें पिक्चर्स पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं, इमेजेस पसंद आती है, हमें कलर्स अच्छे लगते हैं, हम वी फील वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल व्हाइल लर्निंग. एक और बात है, many of us like to write minimum. बहुत वर्ड्स लिखना पसंद भी नहीं होता है, कम वर्ड्स लिखना पसंद करते हैं. तो इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल बात हो गई. एक यानी कहीं पे तो भी वर्ड्स आएंगे, दूसरे यानी कहीं पे तो भी इमेजेस, पिक्चर्स आ जाएंगे. तीसरी बात ये है ना कि हमें कई बार वी डोंट लाइक और वी डोंट रिमेम्बर, नॉट लाइक, we don't remember in a sequence. We don't remember in a sequence. This is one more thing that you are able to see. Now, how does our brain think? ये देखते हैं. When I am thinking of something, let us say, if I am thinking of a chair, if I am thinking of a chair, what is it that comes first in my mind? In my mind, I see a chair. You will see a chair in your mind, in your brain. You will start recollecting how a chair looks like. You will not describe a table when you're describing a chair.
You will describe the chair as a chair only. It's a place to sit. It is made up of wood. It is made up of iron. It has 4 legs. It has a rest. It etc. 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 So you first see a chair. So in the center is the chair. Then there are parts of the chair that will come in. And the chair is made up of wood. There are various types of chairs. There can be a relaxing chair. There can be a straight sitting chair. There can be a hard chair. There can be a soft chair. The chairman sits on the chair. The authorities sit on the chair. The principal, I'm saying, the prime minister also has a prime minister's chair. That chair is about the position and not the physical chair. देखो कितनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, पर ये कहां आ रही है? ये बाद में आ रही है. पहले क्या दिख रहा है? चेयर. So we see the image first in the brain. We see the image first. And then we see or think or visualize the rest of the things. Okay. Now we will first take one exercise. Have you got this idea? ये समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? Yes, कह सकते हो orally बिल्कुल. Because I'm going to close this now. Are you getting this? What I'm saying? समझ में आ रहा है आपको? You're going to talk. Yes, sir. Yes, fine. Okay, fine. Somebody has posted it on the group also. Yes, I'm Yes, saying sir. in the chat box. Fine, fine. And you will talk. I have deliberately tried to see to it that all of you come on the on this Zoom so that we can talk. I want you to talk with me. Of course, one at a time. Now I'll give you one clue. You have, all of you must be having a pen and pencil, pen and a paper with you. I'll give you one clue. Okay. Friend. Think of your friend. ठीक है? Write down her name on the paper. ठीक है? You have written down the name. It could be he could be a friend, she could be a friend, it could be any friend. Now, friend comes in the center. Friend. From the friend, now whether he's a boy or a girl, write down. What is his age? Write down his or her age. What does he like? Write down. Where does he stay? Write down. उसमें से एक एरो निकालो. करेक्ट? बीच में फ्रेंड और ये सारी बातें आ रही है. In which class is he or she studying? Who are his family members? Where did you meet him the last? What is it he likes? देखो कितनी सारी बातें मुझे याद आई. ऐसी सारी बातें आप लिखो. अभी देखो मैं जो कह रहा हूं. See what I'm saying. Did you remember everything that minute? No, you did not remember everything that minute. धीरे 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 एक बार अगर वो एक नाम आ गया है आपके दोस्त का, तो उसके बाद में सारी यादें आना शुरू हो जाता है. सो वो दोस्त आपके सेंटर में है दिमाग के, और उसके बाजू ये सारी बातें चलती.
आप जब आपके दोस्त के बारे में सोचते हो तो आपको वो दिखता है, उसका चेहरा दिखता है, उसका पहरावा दिखता है, what he or she likes, how he or she is, the way he or she talks, the food that he or she eats. वो सारी बातें जो आपने हो सकता है कि क्लास को बंक करके गए थे फिल्म देखने के लिए बगैर घर बताए, और फिर वो छुपा के रखना चाहिए, इसके लिए 2 साल आपने दबा के रख दी थी वो आइडिया, सारी बातें याद आती हैं। इसका मतलब क्या है? द फ्रेंड हियर इज इन द सेंटर एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर अराउंड इट। दिस इज हाउ वी रिमेम्बर। इस रिमेम्बरिंग के प्रोसेस को ही वन ऑफ द साइंटिस्ट, एजुकेशनल साइंटिस्ट, his name was Buzan, Buzan. He came up with something called as mind maps, and we are going to study these mind maps. I'm going to show you one picture, and then we are actually going to create one picture. Can you see these two pictures over here? दिख रहे हैं ना? Now, yes, you can see what are the causes and effects of deforestation. ऐसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, I'm just going to highlight it out. Sorry. याच्यामध्ये अरे तो पेन दिसत नाही, रायटिंग पेन. Okay, fine. Just 1 minute. Okay, no, not an issue. You are able to see over here a tree is to be seen. What is to be seen in this tree? What are the causes and effects of deforestation? And then you are able to see a trunk over here. और फिर उस ट्रंक से डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपको एक क्लाइमेट दिख रहा है, देखो एक क्लाइमेट एक ही होता है क्लाइमेट, उसकी एक टहनी आ गई है, दूसरी क्या आ गई है? बायोडाइवर्सिटी, तीसरी क्या आ गई है? फ्लड, चौथी क्या आ गई है? इरोजन, पांचवी क्या आ गई है? क्रॉप्स, छठी क्या आ गई है? फ्यूल, सातवीं क्या आ गई है? ग्रेजिंग, आठवीं क्या आ गई है? प्रोडक्ट्स। ये कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन्होंने लिखा हुआ है। अब क्लाइमेट जब हम यहाँ पे लेते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, एट दैट टाइम क्लाइमेट की और ब्रांचेस उन्होंने निकाली। वो क्या हो सकती है? वार्मिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है? देयर इज समथिंग मोर दैट दे हैव रिटन डाउन, ऑल दो स्मॉल थिंग्स दैट दे हैव मेड अ मेंशन दैट आर रिलेटेड टू कार्बन लिखा हुआ है। Then you are able to see a variety of things that are written down. ये उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती जाती है। अब जब बायोडाइवर्सिटी कहते हो तो यहाँ पे दिखता है स्पीशीज, वेजिटल, एनिमल, इतने टाइप की डाइवर्सिटीज आ जाती है। जब आप फ्लड्स कहते हो तो बारिश कहते हो, बारिश के साथ में और कुछ आ जाता है। जब आप इरोजन कहते हो जमीन, तो उसके साथ में ड्रॉट आ जाता है, उसके साथ में सॉइल फर्टिलिटी आ जाता है, उसके साथ सॉइल आ जाती है। यानी पहले हमें बड़ा कंसेप्ट दिखता है, उसके बाद में उसका छोटा कंसेप्ट दिखता है, और उसके बाद में हमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट दिखते हैं। अब यहाँ पे भी एक और चार्ट है, सी दिस एरिया कॉल्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहने के बाद में हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम अगर उसको हमने एक टहनी बना दी है तो प्रॉब्लम के बाद क्या आ जाएगा? डिफाइन, डिफाइन द प्रॉब्लम। और क्या आ सकता है? एक्सप्लोर द प्रॉब्लम। और क्या आ सकता है? गैदर ओपिनियन अबाउट द प्रॉब्लम। कैन यू जस्ट sorry, कैन यू सी दिस प्रॉब्लम?
डिफाइन एक उसकी ब्रांच हो सकती है, एक्सप्लोर उसकी दूसरी ब्रांच हो सकती है, गैदर ओपिनियन तीसरी ब्रांच हो सकती है। अगर हमने गैदर ओपिनियन कहा तो क्या आएगा, फैक्ट्स आ जाएंगे। तो उसका एक और यू आर एबल टू सी समथिंग कॉल्ड एज फैक्ट्स, इसमें लिखा हुआ दिख रहा है। ओपिनियंस आ गया, फैक्ट्स आ गए। अगर हम एक्सप्लोर कहते तो फीलिंग आएगी, ऑप्शंस आएंगे, अदर्स आएगा, ओन्स फीलिंग्स आएंगे, दूसरों की फीलिंग्स आएंगे, ऑप्शंस आ सकते हैं एक्सप्लोर करने के, और कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, मेन इश्यू आ सकता है। और जो एक्सप्लोर करने के लिए कहा, एक्सप्लोर का यहाँ पे उन्होंने पिक्चर डाल दिया है, वो किसका है, इट्स अ दूरबीन का डाल दिया कि एक्सप्लोर क्या क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको दिखाने के लिए। अगर हम डिफाइन कहते तो डिफाइन क्या कर सकते हैं, इमोशनल क्या है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इमोशनल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, तो उसके ब्रांचेस निकाल के दिए। द मिनट आई से प्रॉब्लम, I remember, define, explore, gather opinions. The minute I said if you define, I remember business, personal, practical, emotional. और फिर जो पिक्चर मुझे याद आ रहा है वो पिक्चर भी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सोल्यूशन कहता हूं तो सोल्यूशन आता है तो हमें रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट आते तो क्या है, रिजल्ट क्या है ये देखते हैं, व्यू, फॉलो अप देखते हैं, प्लान देखते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। रिक्वायरमेंट कहते तो टाइम आता है, मनी आता है, रिसोर्सेस आते हैं, पीपल आते हैं। ये जो पैटर्न है ये हमारे दिमाग का पैटर्न है, इस तरीके से हम सोचते हैं। आपने इसमें देखा होगा कि इसमें कलर्स भी आ गए हैं और हर जगह पे सिर्फ एक वर्ड आ गया है, trying this is Buzan's method of learning. We are going to try this Buzan's method of learning today. Now I'm going to give you an example over just 1 minute. Just 1 minute. I'm going to give you an example over here. We all are going to solve it out. Okay? I'm giving you one example. Okay. The example that I'm going to give you is tree. ट्री मैंने कहने के बाद में आपको ट्री की क्या क्या बातें याद आती है, कैन यू टेल मी? रूट्स, right? Then you are able to see stems or trunk. Am I right? Then you are able to see branches. ये तीन एरियाज अगर हमने ले लिए है इसके, तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल यू राइट डाउन अबाउट द ट्री? ट्री एक मेन ब्रांच आ गई ट्री की, दैट्स व्हाट यू आर एबल टू सी ओवर हियर. कैन आई ड्रॉ फिगर के लिए? I have drawn a tree over here. ठीक है? This is the big tree that I am drawing. It is a little difficult for me with this tool. Okay. Now, with this tree, I am then going for the next concept called as the branches. This is a tree trunk. This is the branch. There are roots.
यहाँ पे हमने लिखा है रूट्स को, है ना, दिस इज रूट। अभी रूट के आगे और क्या आ सकता है? कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई राइट डाउन ओवर हियर? आई होप यू आर एबल टू सी द पिक्चर। रूट्स के आगे हम क्या डाल सकते हैं? ये क्या दिख रहा है हमको? छोटे रूट्स को क्या कहते हैं? रूटलेट्स। ठीक है, उसके आगे भी और क्या डाल सकते हैं? ये रूटलेट है और उसके आगे और भी छोटी रूट्स आते हैं, तो फाइन हेयर लाइक रूट्स। ये रूट्स के बारे में होगी। अगर हम ब्रांचेस की तरफ जाते हैं तो हम ब्रांचेस के लिए क्या डाल सकते हैं? कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट? सब ब्रांचेस। करेक्ट, एक हो गई ब्रांच, हमने ब्रांच को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी सब ब्रांचेस आएंगे, एब्सोल्युटली राइट, वी विल हैव टू राइट डाउन सब ब्रांचेस। इसके हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले ब्रांच। जस्ट 1 मिनट, this is a sub branch that I am drawing, just 1 minute. Sorry. Sorry. कहाँ गया वो व्हाइट बोर्ड को? तो सब पेन कुठे गेला रे? Yeah, fine. Let us say we have a sub branch over here. This is not going to be a permanent one. I need to have a permanent pen over here. Okay, fine. This is one sub branch. This is second sub branch. This is third sub branch. Fine. Okay, we have sub branches. Now, what more do we have? Can you tell me anything more than that? This is a sub branch that we have. Okay. So we will be writing down sub branch. Fine. What do we have to the sub branch? Can anybody help me? As you made a mention, I am writing down sub branch. Yes. What will end up with the sub branch? Can you tell me? Leaves. Leaves, absolutely right. That would mean that we लीव are स्टॉक। gonna, we will be having leaves. Okay. Just 1 minute. Sorry. It's we have leaves over here. Now then we have something more. After the leaves, there will be something more with the leaves. Now we have leaves over here, let us say. These are the leaves. After the leaves, what more will we have over there? लीफलेट्स। Leaflets, okay. There can be a complex leaf, then there can be leaflets also, fine. So I am putting up a leaflet also over here. Now, leaf के बाद leaflet आ गया. उस branch को और क्या हो सकता है? Correct. Flowers or fruits. Flowers हो सकता है, absolutely right. Fruit भी हो. Fruits हो सकते हैं, right? So you are able to see there can be something more to come in over here, and यहाँ पर एक और भी आ सकता है, and that can be fruits. और क्या हो सकता है? सीड्स हो सकते हैं, है ना? There can be seeds also that you are able to see. Yeah. Now, with leaves, what more can you remember? बर्ड्स। Okay, birds can come into picture. What do leaves do?
They are green in color. And what is that green color related to? Photosynthesis. Absolutely Chlorophyll. right. Chlorophyll. Photosynthesis. CHLO-ROPHYLL. It could be related to photosynthesis. So you are able to see we only started with a branch. We started with the trunk that you are able to see over here. From the trunk, we have gone ahead. Just 1 minute. From the trunk to the branches to the roots. Roots आने के बाद में हमको रूटलेट्स याद आ गए. रूटलेट्स के बाद में फाइन हेयर्स आ गए. उसके बाद में शायद ये भी याद आ जाए. They absorb water. They have xylem tissue. और भी कुछ याद आ सकता है हमको. यानी slowly the entire tree will be written down by us. और हर जगह पे एक ही वर्ड आ रहा है. देखो रूट, अगर हम ट्रंक कहते तो ट्रंक के बारे में हम चाहे जितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखते वक्त एक ही ट्रंक आ गया है. उसके बाद में रूट आ गया है. उसके बाद में रूटलेट आ गया. उसके बाद में फाइन हेयर्स आ गए. उसके बाद में वाटर एब्सॉर्प्शन आ गया. अगर हम ट्री के ब्रांच को कहते तो ब्रांच आ गई. ब्रांच को कितने सब ब्रांचेस आ गए. सब ब्रांच को क्या हो गया? लीव्स आ गए. लीव्स के बाद में क्या हो गया? लीव्स को लिफलेट्स से. लिफलेट्स को क्या था? वो ग्रीन कलर था. ग्रीन कलर क्या क्यों है? क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है. हमने सोचा एक ट्री को था, और ट्री को सोचने के बाद में, ट्री को सेंट्रली लेने के बाद में, यू आर एबल टू सी सो मेनी स्टोरीज जनरेटिंग आउट ऑफ. इस तरीके से हमें याद आता है. We don't recollect out the way we have written down on the paper. We recollect it out as we start going over there, as we start visiting that thought. Are you getting it? This putting on the paper for the purpose of remembering are called as Buzan's mind maps. Are you getting the idea? समझ में आ रही है आपको? Can you understand what I'm trying to say? Yes, sir. Okay. Now we will have one more exercise. This time I'm not going to draw it out because I have some limitations. The big things will always have curved branches. You saw it in the picture that there were curved branches that you are able to see. Can we take one example? What example can we take? Who will like to give any one example? We will all build up one story over it. Yes, please. Will somebody like to give one example? कोई भी एक example. चलो ऐसे करते. मिठाई. मिठाई is in the center. Fine. Write down the concept called मिठाई. Now, if you write down मिठाई, what are the big things that you remember after you write down mithai? Can somebody help me? Sugar, absolutely right. That is what Fatima makes a mention as sugar. Okay. What more can come in? That is sweet. Milk. Put the heads. Milk, sugar, milk. What more? Ghee is one more concept that has come up. What more can come in? 1, 2, 3. Variety. Somebody has made a mention as ingredients. You can all take it as ingredients. Color, absolutely right. Right, very true. Dry fruits can come into picture. Then what more can come into picture? Colors can come into picture. Calories can come into picture. Somebody is calorie conscious. Yeah, khoya can come into picture. Non-khoya sweets can come into picture. Types of sweets can come into picture. Sweets and festivals can come into picture. है ना? Sweets and happiness can come into picture. इतनी सारी बातें आ सकती हैं, और हर बात को आप बहुत सारी बातें ऐड कर सकते हैं. तो एक करके दिखाओ तो मुझे. Just we will take one part over here. Let us say ingredients.
स्वीट्स लिखा है, उसके बाद में आ गया इंग्रेडिएंट्स, एक ब्रांच उसकी इंग्रेडिएंट्स की लिखो। अभी इंग्रेडिएंट्स के सारे नाम डालते जाओ, इंग्रेडिएंट्स को छोटे छोटे ब्रांचेस निकालने और उनके नाम डालो, फिर शुगर, घी, मिल्क, खोया, मिल्क लिखो तो चलो। ठीक है, अभी शुगर को क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और क्या लिख सकते हो? वन, एक एरो छोटा लीफ उसका आ गया कार्बोहाइड्रेट। और क्या आ सकता है? स्वीट, करेक्ट है। ग्रैन्युलर, वाइट, फ्रॉम शुगर केन, 5 पॉइंट्स वहीं पे आ गए देखो। शुगर केन। घी के बारे में क्या लिखोगे? वहां पे फैट लिखा, वहां पे कार्बोहाइड्रेट लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फैट्स, fats, एनिमल फैट्स, वो भी आ सकते हैं, प्योर एनिमल घी, फैट्स। यस, प्योर घी, काऊ घी, बफेलो घी, टेस्ट, है ना। देन समथिंग मोर, you can, it will become a complete big picture. You'll remember so many things about those things, about that particular sweet. Just one sweet in your mind and you're able to see, you'll have a complete picture of thoughts. This is how Buzan's mind maps are prepared. When you are learning a difficult topic, when you have read it and you are recollecting it, you can try Buzan's maps. You may not write it down the way in that particular examination, but for recalling, you can always use it. And the more you do with it, the more you will keep on remembering, because you are going for something called as critical thinking, yesterday that we have thought about. So if we don't forget, but we don't recollect everything. We recollect it in points. So just go on putting those points. For example, there are students of zoology over here. If I say digestive system, then automatically 5 parts come into picture, or 5 functions come into picture. I know not everybody is from zoology. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion, 5 parts are. अगर हम डाइजेशन इंजेशन कहेंगे तो इंजेशन के पार्ट्स क्या आ गए? माउथ आ गया, टीथ आ गए, टंग आ गया, टेस्ट आ गया, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, बकल कैविटी आ गई। टीथ कहेंगे तो 32 टीथ, टीथ कहेंगे तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ कहेंगे तो डेंटल फॉर्मूला, टीथ कहेंगे तो टाइप्स ऑफ टीथ। कितनी सारी बातें आ गई। ऐसे अगर हम करेंगे तो एक बड़ा पिक्चर बन जाएगा। So remembering things become very easy, and therefore Buzan's mind map is one way to remember out the things. It's a great method. As you start trying on it, you will slowly start liking it out. If you put the word called Buzan's mind maps, you'll keep on finding a lot of things. You will also find some videos that have been created by Mr. Buzan. He used to live in Singapore, and he has trained lakhs and lakhs of people with respect to learning methods. So you can try this method, and this is a wonderful method for studies, for remembering. You can try it in groups, work it out, and you will be able to see, you will remember innumerable details of a particular thing. So this is what I wanted to tell you with respect to Buzan's mind maps. Did you understand this? Did you get it? I'll just Yes. like to show you some of the pictures of Buzan's mind maps. I will be going on Google. I'll put Buzan's mind maps. Just 1 minute. Yeah.
You are able to see a range of pictures over here. They may be looking very small for you, but just try to get the idea how it is. You can prepare it this way, that way, in the way you want to. Depending on the complexity of the topic, you will be able to see how Buzan's mind maps work over here. Just 1 minute. Yeah. You can see the things over here. Just 1 minute. In this picture, you are able to see, for example, B skills has been mentioned out. There's a word called B skills that you are able to see over here. You are able to see it? Are you? No? Yes, sir. You can see, na? So B skills. So brain cell 1, select emperor controls 10,000 bees. ह्यूमन के साथ कंपैरिजन कहीं पे तो भी डाला है. बी बिल्ड क्या करते हैं, हाइव करते हैं, नेस्ट करते हैं, हनीकोम करते हैं, कम्युनिटी करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्वीन रिप्रोड्यूस करती है, एग्स डालती है, हजारों एग्स डालती है, शी इज द मदर ऑफ द कॉलोनी. ड्रोन्स के बारे में क्या, दे आर द मेल्स ऑफ द कॉलोनी, वगैरह 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 वगैरह. सारी बातें धीरे धीरे करके यू कैन ब्रिंग इट. This is what is an example of the mind map that I wanted to showcase to you. There are hundreds of such kind of maps available on the net. You can always see them, and that will give you a fair idea as to how Buzan's mind maps are prepared. Now, if you have got this, we will just go a little ahead, look into the last part of our presentation. And that happens to be something called as examination skills. This is the last part. You all know what all happens in the examination skills. When I was in my graduation days, I used to get so excited at the time of paper. On the previous night, I used to be so stressed. I used to write down the entire notes. I used to remain awake till late night because I used to be scared. And when I used to see the paper, I used to be so happy that my hand used to become cold, to the extent that the fingers did not turn then, and my handwriting used to become very difficult. The pen, I used to hold the pen very tightly at that time. This should not happen. This is a wrong thing to happen. When we are going for examination skills, the first thing is we need to conquer the fear. This is the biggest thing that we need to do. We still have fear. When we have studied also, we have fear of the unknown. And of course, if we are not studied well, there is a lot of fear. The first part is that manage your stress. The second part is that avoid distractions. Somebody is saying, help me. He is a very good friend of yours. If he is really your good friend, don't help him in the examination. In case you are caught, you are going to go out of the class, he is still going to sit in. In case he is caught, he will go out of the class and you can do nothing. In case both of them are caught, you are caught for nothing. Don't be stressed, because once you are stressed, you get scared. If you get scared, you start preparing cheats. So don't let that happen. Study in advance. Trust yourself. आएगा मुझे. I am not worried about it. In the examination room, be cool. I like to share something. I am a zoologist. When I was doing my graduation, it was a Dashera day. Dashera is a holiday. My brother was to get married on the Dashera day. I had a paper previous day. I had a paper next day. I thought paper 1 was after, in zoology, was after Dashera. And paper 2 was the next day.
I prepared for paper 1. I went there. All the papers that time were paper 1, paper 2, paper 1, paper 2, paper 1, paper 2. For zoology, it was paper 2, paper 1. Because my brother was to get married, I had studied, but I did not study the previous day. एक तो शादी थी घर में, हम लोग पुणे से नासिक जा रहे थे. उस समय तो ऐसे के लाइट्स वाले कार्स नहीं हुआ करती थी. वो एक मैटेडोर नाम की चीज थी, उसके अंदर अंधेरा था तो पढ़ नहीं सकते थे. घर जाने के बाद में घर में सब मेहमान थे और मैं पेपर की पढ़ाई कर रहा था. I went to the paper and that day it was not that paper. एक तो शादी थी घर में, शादी का घर था तो इमीडिएटली तो पहुंचा नहीं, 5 मिनट देर से पहुंचा था. अंदर गया, देखा तो पेपर देख के चक्कर ही आ गया. अभी क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? I had studied, but I had not studied the previous night. Rather, I did not know it was this paper. So foolishness. I could not remember anything for a while. I closed my eyes. Everybody was writing. And I started thinking what could be the possible answers of all these questions. I was thinking. For 5 minutes, all this went on. And I started recollecting. And then I wrote down the paper, and it was the best paper that I had ever written in my life. I wrote down that paper very well. The next day, what I had prepared, I again prepared and went on. I got lesser marks for that. Relatively lesser marks for that. So don't be stressed. Don't panic. If you have studied, you are going to write. Tell yourself, I can write this. Don't worry. अगर याद नहीं आता है तो रफ पेज पे बुझान का मैप बनाओ. जो याद आ रहा है उसके ऊपर से स्टोरी बनती जाएगी. उसको फिर वर्ड्स में डाल देना है. जो याद आ रहा है वो लिखते जाना है, वो लिखते जाना है, वो लिखते जाना है, वो लिखते जाना है, वो लिखते जाना है. Therefore, we took Buzan's map. Don't get distracted. Attempt your questions very wisely. Manage your time very effectively. See कितने मार्क्स से उसको टाइम का वेटेज दे दो. जो आता है उसको पहले लिखो. जो नहीं आता है उसको बाद में लिखेंगे. कम आता है उसको बाद में लिखेंगे. But don't be scared. Don't run away. Don't go for wrong methods. I remember a friend of mine. Somebody threw a chit at him. He picked it up and he was caught. The exam that time was very bad. He was debarred for 3 years. In his life, he could never study. क्योंकि 3 साल में उसका मन ही उड़ गया. He got a job. He started working on the job. So don't let that happen. Don't let others rule your destiny. Be very careful. पढ़ाई आती है उस तरीके से पढ़ाई करो, उस तरीके से प्रिपरेशन करो और जो आता है वो लिखो. And for which conquer your fear, is the most important part. If you are not able to remember, it means that there is some problem. You are stressed. See to it that what you have studied, what you have by-hearted, what you have understood, comes on the paper.
Some time ago, someone was telling what method I use. It was a wonderful method. He made a mention. I take down the points. I make small questions. That means I analyze the content. That's what he was telling. I look at the paragraph, I break it into questions. Then I write down the answers. I analyze it. I read it out. Somebody made a mention saying that I underline highlight the importance of sentences. I make the note of it. I read it and I'm able to work it out. Find what's your way. Work on it. You will definitely succeed. So you're able to see these were the two skills that we wanted to talk, and that happened. And these two skills were how to prepare for exam and how to give the exam. That is how to revise and how to give the exam. I hope all of you have enjoyed the session. It was, of course, something that you had to learn, but I hope you liked the new method of Buzan's mind maps. And this is the last session. Now I am going to ask you, today we are going to have some live feedbacks about the entire program, and then we are going to stop. That will be for 5 minutes. If you have attended the sessions, majority of the sessions, if you wish to talk something about what I have taken and Madam has taken, we like to listen to you. These sessions are available on the LMS, Snow Pandit. You are going to go there. The questions will also be coming. You are going to answer these questions. In case you fail to answer those questions, you have a chance to answer those questions again till you pass. There is nothing called as an examination of Mumbai University or Nanded University or any university. You should understand the concept is the big concept. There is a certificate for this particular course, and that certificate is going to be useful to you. Maybe you may be having some extra credits. In case you have it, these credits will be useful. So now we will take the feedback session. I like to hear 1 or 2 feedbacks. Teachers can participate, students can participate, and we will be stopping down in 5 minutes. Oral feedbacks are welcome. जो भी पसंद आया है, जो नहीं पसंद आया है, दोनों बातें आप बता सकते हो. बिंदास बोलो, कोई चिंता नहीं है. Thank you very much, sir. I like this session very much. Let me know what your name is. Because participant name दिख रहा है यहाँ पे. So I like to hear who you are, from where you are, and what is it that you like. Yes, please. Yes, please. Please go ahead. Please tell your name. From which college are you? Hello. You are speaking, yeah. My name is Mohini Makode from Vinayak Vignan Mahavidyalaya, Nandgaon, Khandeshwar. Okay. Thank you, sir. The session is very good and useful. I like this session, and ma'am too. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. You spoke very well. Yes. Will somebody else like to talk? I'd like to hear from you rather than putting it in the chat boxes. You may also tell, this is what I like, this is what I think, so I did not understand. Please feel free to talk. After this, I don't know whether we will be meeting again. Sharik, do you wish to say something? I don't know how it is to spell it, whether it is Ikra or Ira, how it is. Will you all like to talk out? Very happy to hear the feedbacks, see the feedbacks. I like to hear them. It's no forcing, but we'll love to hear from you. Okay. I'd like to hear from you if you can speak out. Yes, Javed, please.
Okay, fine. You have to give your examinations. You have an exam, you have to give that, and only after that you're going to get your certificates. So, and all that process is going to be where? On the LMS called Snow Pandit. So you are going to appear for those exams. The Snow Pandit is going to remain for 8 more days, that will till next Sunday, only after which we will be having in. I'll be coming in just 1 second. Just 1 second. Hello, 1 minute. Hello. सर Yes, please. सर हम लोग जो है हिमालय हाँ। पब्लिकेशन रिफर करते हैं, तो उसमें ना हर एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट रहती है, तो हर हाँ। एक लाइन को हम लोग कैसे मेमोराइज करेंगे? एक बात आप वापस बताओगे? कैन यू प्लीज टेल मी अगेन, जवेरिया? यस सर। या यस सर। सर हम लोग जो बुक रिफर करते हैं तो हम हाँ, लोग हिमालय पब्लिकेशन यूज करते हैं, तो उसमें जो है ओके, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट रहती है, तो अच्छा, उसको हम लोग मेमोराइज कैसे करेंगे? ओके। ऑनलाइन एक एग्जाम में बात तो हम लोग ने हो गया था, ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए कैसे करेंगे? एक बात ये है जवेरिया के उनके जो की कंसेप्ट्स है ना, उनको देखो। आप लाइंस के मेमोराइजेशन के ऊपर मत ही जाओ। उस पैराग्राफ में कितने कंसेप्ट्स दिए हैं? 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, उनको देखो। उन कंसेप्ट्स को ही समझ लो, अपने वर्ड्स में डालो। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू मेमोराइज, रादर यू शुड नॉट मेमोराइज। आज आप SYBSC में मेमोराइज करके दिखोगे, कल अगर आप MSc के लिए गए तो आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो किताबें होंगी वो 2000 पन्नों की होगी। क्या क्या याद करो? सो क्या देखना है हमने? उनके कीवर्ड्स क्या है या उनके यस सर। कंसेप्ट्स क्या है। मान लो कि एक पैराग्राफ में अभी आप मान लो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें। पहले पैराग्राफ में डाइजेस्टिव सिस्टम, the digestive system is defined as, let us say, number 1, ingestion, a system that performs ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion। ऐसे मान दो ये 5 कंसेप्ट है। ये एक सेंटेंस में आ गए, इनका मतलब क्या है, ये पहली बात आती है। तो इंजेक्शन क्या होता है, तो इंजेक्शन के साथ क्या क्या आता है, डाइजेशन क्या होता है, उसके साथ क्या क्या आता है। तो ये इन वर्ड्स को, इन कंसेप्ट्स को हम हमारे वर्ड्स में जब लेना शुरू होंगे तो दैट गोज विथ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखोगे ये लर्निंग अगर देखोगे, ये आपका पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको कुछ बातें थोड़ी सी बताता हूं। इसको हम जरा एलिमिनेट कर देते हैं, जस्ट 1 मिनट, just 1 minute. Let me erase out everything. अगर हम लर्निंग देखते हैं तो लर्निंग की कुछ स्टेप्स होती है। पहली स्टेप जो होती है लर्निंग की, वो होती है नॉलेज। और नॉलेज आता है हमें मेमोराइजेशन के साथ, और मेमोराइजेशन आता है रट्टा मार मार के। पर अगर आप स्टेप 2 को जाते हो तो वो मेमोराइजेशन नहीं रहता, तो वो लेवल 2 आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अगर आता है, अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है तो आपको वो वर्ड्स नहीं लगते। अंडरस्टैंडिंग किसके साथ आता है? कंसेप्ट्स के साथ आता है। अंडरस्टैंडिंग किसके साथ आता है? की वर्ड्स के साथ आता है, की सेंटेंसेस के साथ नहीं आता। अगर आप उसके आगे जाते हो, नंबर 3,
अगर उसके आगे जाते हो, अंडरस्टैंडिंग के भी आगे जाते हो, तो आप आते हो एप्लीकेशन के साथ। आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हो। आप कहते हो 32 दांत होते हैं, बराबर है, ये अंडरस्टैंडिंग था, पर उनके शेप्स अलग अलग है और अलग अलग शेप्स के साथ हम अलग अलग चीजें खाते हैं। जैसे चपाती खानी हो तो पीछे के दांतों से खाते हैं, और बिस्कुट खाना हो तो आगे के दांतों से खाते हैं, और पानी पीना हो तो दांत लगते ही नहीं है। एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे, किस चीज को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम आगे उसके भी आगे जाते हैं और भी उसको जरा बारीकी से देखते हैं, तो उन चीजों का एनालिसिस शुरू हो जाता है। ये फोर्थ स्टेप ऑफ लर्निंग है। फिफ्थ स्टेप ऑफ लर्निंग है कि ये जो पढ़ा है उसका कितना इवैल्यूएशन है, उसको कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं। और छठा जो एस्पेक्ट होता है वो क्रिएशन का आता है। एक बात याद रखो, हर जगह पे ये आएगा, ये ऐसे नहीं, पर हम जितना हम लेवल 1 से जाएंगे, जो आप आज बात कर रहे हो कि हम इसको मेमोराइज कैसे करें, तो जितना भी हम वॉट हाउ मच सो एवर दैट वी आर एबल टू सी, इफ वी कैन क्रॉस दिस कंसेप्ट ऑफ मेमोराइजेशन, एंड इवन इफ वी कैन गो अप टू दिस लेवल अंडरस्टैंडिंग, या कहीं पे तो भी एप्लीकेशन, then things will be easier for you. You will not have to memorize. That's what I'm trying to tell you. So focus on, not on memorizing, focus on understanding the concepts. If we don't understand the concepts, we have to go for memorization. उसके लिए पहले थोड़ा वक्त देना पड़ता है उस कंसेप्ट को समझने के लिए। एक बात आप कर सकते हो, आई डोंट नो if you like to learn with your friend, if you have a good friend who also wants to study, अगर उनके साथ बैठ के आप डिस्कस करते हो, तो आप धीरे धीरे मेमोराइजेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग से एप्लीकेशन की तरफ जाओगे। फिर आपको हिमालय का बुक हो या प्रगति प्रकाशन का बुक हो या किसी भी बुक के कंसेप्ट समझेंगे, बाय हार्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू गेटिंग मी? यस सर। आपकी मेथड जो है पढ़ने की थोड़ी आपको चेंज करनी होगी, क्योंकि उसके पहले की जो आपकी मेथड थी वो बाय हार्टिंग की थी, और जो कि अभी कंटेंट बदलना शुरू हो गया है, तो अब वो मैच करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो स्टाइल 10th तक अच्छी थी, कैसे वैसे 12th तक चल गई, पर आगे नहीं चलने वाली। तो आगे हमें ही चेंज करना होगा। वी नीड टू चेंज दैट कंसेप्ट। ओके, this is a good question that you have asked. This is a question that goes with so many students. So we need to understand the concept. उसमें क्या कीवर्ड्स है, उसमें क्या कंसेप्ट्स है, अगर हम इनको जान लेते हैं तो फिर हम हमारे वर्ड्स में लिख सकते हैं, और वही हमको चाहिए। ओके, आपने वो 3 इडियट्स की स्टोरी देखी होगी, 3 इडियट्स की फिल्म देखी होगी, उसमें कई सारी ऐसी क्लिप्स है कि मेमोराइजेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ बिग रोल, दैट कम्स इन ओवर हियर। That's good you asked this question. Anyone else has a question? थैंक यू सर। Thank you. Yes, please. Any other question to come? Okay, no questions? Shall we stop now? Okay, so we are completing the course today. It was a 1-week course. We have completed the course. You are going to go on the what do you say, LMS called Snow Pandit. You are going to see these videos again. You are going to answer the questions, and I want you to get the certificates.
So thank you so much for being with me for these 2 hours again, and hope to see you again in a new course. Thank you very much. Amit, today's session is completed. Okay, thank you, sir. Thank you.